Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Mozma Batul, where I help you prepare exams for your English and other competitive exams. आज की वीडियो में I'll talk about 10 essays जो कि CSS के एग्ज़ाम के लिए most expected हैं based on current affairs, past paper trends and examiner preferences. So if you are preparing for CSS or even PMS, PPSC, FPSC or any other competitive exam, so don't skip this video. Let's begin. In this video, I'll discuss 10 most expected and important essays for CSS or any competitive exam. So first essay is democracy. Democracy in Pakistan and in all over the world. So first essay is democracy. Democracy is a hot topic for nowadays, for all time, due to political instability in the Pakistan or in all over the world. So this essay is much more expected and important. So must prepare this. Second essay is Constitution of Pakistan, means balance of power. Because constitutions are considered a law, जिसके अकॉर्डिंग एक कंट्री ने एक स्टेट ने चलना होता है. तो constitutions play most important role in the state. Second essay is Constitution in Pakistan. Basically constitutions play very vital role in the state और पाकिस्तान की constitutions को पढ़ना और इसके बारे में पूछा जाना एक बहुत ही यूजुअल सी बात है क्योंकि आए रोज़ हमारे constitution में change या need of change तो ये सारे topics discuss होते रहते हैं. So this essay is also important. So must do it. Third essay is also very important, which is climate change in Pakistan. या ये दूसरे नाम से भी आ सकता है environmental crisis in Pakistan. So ये ऐसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिगार्डिंग और करंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री जहाँ पे वेदर चेंज बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, चाहे वो समर हो, विंटर हो, कोई भी वेदर हो वो एक्सट्रीम होता जा रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर कमिंग CSS एग्ज़ाम. इसको मस्ट प्रिपेयर कीजिएगा बिकॉज पाकिस्तान इज़ among the 10 top countries which are facing very fast climate change. So this topic I think is very important, so must prepare it. Fourth important and expected essay is water crisis, a threat to Pakistan's survival. क्योंकि water crisis directly एक danger है to the security of the Pakistan, to the survival of the Pakistan. So water crisis. इन पाकिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है. इसमें आपको डिफरेंट तरह से पूछा जा सकता है या अगर जस्ट वाटर क्राइसिस भी आ गया तो आपने इसको फर्दर एक्सप्लेन करना है. नीड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग न्यू डैम्स, हाउ टू सेव आवर वाटर एंड मेनी अदर पॉइंट्स रिगार्डिंग वाटर क्राइसिस यू कैन डिस्क्राइब इन दिस ऐसे. सो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान सर्वाइवल. ऑन फिफ्थ नंबर एक्सपेक्टेड ऐसे इज वुमेन एम्पावरमेंट. वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा नॉन टॉपिक है जो कि हर तरह के एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होता है बिकॉज नाउ डेज वुमेन एम्पावरमेंट की बात हर कोई करता हुआ नज़र आता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी एमर्जिंग टॉपिक दिस इज़ इन द सोसाइटी इन द करंट टाइम्स. सो यू कैन डिस्क्राइब एम्पावरमेंट. सो ऐसे इज़ वुमेन एम्पावरमेंट. So women empowerment is important topic to prepare for the CSS exam and you have to describe that women empowerment is an illusion or reality it is. या आपने डिस्क्राइब करना होगा इसमें according to your opinion. Next expected essay is brain drain, a silent crisis of Pakistan. This essay is also very important and expected because in this essay you have to discuss that highly educated and capable youth is leaving the country and this is becoming a serious issue for all the nation, for all the country, just because of a few factors like unemployment, lack of researching fund or most important political instability. So ये essay बहुत ज़्यादा अहम है regarding
CSS point of view. Next important essay is most common and ये बहुत ज़्यादा important है. It's about artificial intelligence, means AI. You have to discuss that its opportunity or risk for Pakistan. So essay is artificial intelligence, which is opportunity or risk for Pakistan. Because students, this is the AI era. Everywhere AI is making its place on high level. Even artificial intelligence is changing everything: job, education, communication, defense, everything. So what is the infrastructure of AI in Pakistan, and what are the risks we are facing due to AI? Next expected and important essay is about social media, means disinformation. ये नेगेटिव सेंस में पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया डिसइंफॉर्मेशन में या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में क्या रोल प्ले करती है. वैसे ओवरऑल भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है. तो ये डिसइंफॉर्मेशन एक ग्लोबल चैलेंज है, बिकॉज ऑल द वर्ल्ड इज फेसिंग दिस serious issue. Social media is spreading fake news, propagandas, and digital manipulation on high level. Even social media is reshaping the whole society. So you have to describe about social media or its disadvantages along its advantages. Or second last important essay is CPEC, Pakistan's geopolitical future. एक बहुत अरसे से CPEC और इससे रिगार्डिंग जो टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसीडर किए जाते हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज CPEC इज़ कंसीडर्ड गेम चेंजर फॉर पाकिस्तान. बट यू हैव टू डिस्क्राइब स्ट्रेटजीज, रिस्क इन दिस प्रोजेक्ट एंड इकोनॉमिकल बेनिफिट्स. एंड CPEC में आपने बहुत सी एक्सटर्नल पावर्स को भी डिस्कस करना है, लाइक चाइनाज रोल, US response or regional cooperation. These all points should be included in the essay. So last important essay which is expected for the coming CSS exam is education crisis in Pakistan. Is it reform or regret? In this essay, discussable points are different education styles like English medium, Urdu medium and madrasas education, which are causing class divide in the education system. Moreover, syllabus differences in all over the country, ये बहुत serious issue है. तो ये सारे जो points हैं वो आपने education crisis in Pakistan के अंदर discuss करने हैं. You can add little bit about the teachers' role and the institutions' roles and all that in this essay. So students, these all were most important and expected essays for CSS and all other competitive exams like FPSC, PPSC and all competitive exams. आपको इन सारे essays में से कौन सा ज़्यादा important लगता है and which essay you have prepared? Must give your opinion in the comments. Like this video and share this video with all CSS aspirants and all the students who want to appear in any kind of competitive exams. So don't forget to subscribe this video and must hit the bell icon so that you can get all the notification of my videos in the future. Thank you so much for watching this video. I hope ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगी. Thank you so much. Allah Hafiz.